सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हेयर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो जिसके अंदर हम रिएक्ट करने वाले हैं पूजा भट्ट की एक स्टेटमेंट पे जो कि उन्होंने दी है सिद्धार्थ कनन के शो पे। बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं सिद्धार्थ कनन भाई। और डुलकर सलमान ऐसे ही कुछ नाम है भाई। उनका आ रहा है अगला प्रोजेक्ट, तो उसके प्रमोशन पे शायद पहुंचे थे और ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अपन वो इंटरव्यू पूरी की पूरी रिव्यू करेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमाल रिस्पॉन्स है आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं। तो गाइस कमेंट्स ना स्पैम मत किया करो, मतलब एक कमेंट एक ही बार करो, वो पढ़ने में ना आसानी रहती है थोड़ा ना रिक्वेस्ट पूरी करने में। और ये देखो कि इतने लोगों की अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट अगर मैं हिसाब से पैटर्नाइज्ड वे में पूरी करूँगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता कि आपकी रिक्वेस्ट आ जाइए तो मैं आज ही रिएक्ट कर दूँगा। तो ये होता है कि सुबह 10 बजे वाली जो रिएक्शन अपलोड है उसके अंदर कंफर्म है कि किसी ना किसी का सजेस्टेड वीडियो होगा। तो प्लीज़ गाइज़, मैं सभी के जो कमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़ता हूँ, और अगर कोई रिक्वेस्ट मुझे लगता है कि हाँ रिएक्ट करने वाली है तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो सुबह 10 बजे पक्का रिएक्शन वीडियो मिलेगी आपको आप ही के सजेस्टेड गाने पे। उसमें शाउट आउट भी मिलता है, सब मिलता है। तो गाइज़ इसी प्रकार हम करते हैं रिएक्ट हमारी आज की वीडियो पे। एंड लेट्स सी व्हाट सिद्धार्थ कनन भाई हैव फॉर अस टुडे। और पूरी की पूरी इंटरव्यू देखना चाहूँगा मैं। अरे वाह, टाइटल है हु टोल्ड डुल्कर सलमान दैट ही विल फेल। भाई साहब ये जानना हम भी चाहेंगे, बट भाई मैंने सुना है भाई अच्छा करता काम। हाय, दिस इज पूजा भट्ट। एक सेकेंड, ऑडियो थोड़ी बेटर कर लें। Hi, this is Dulquer Salmaan, Hi, Balki here. and please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. नाउ Now. बिल्कुल गाइज, जाके सब्सक्राइब करो भाई का चैनल। ये जब 3 लोग रहते हैं तो कोई माइका लाल इनको चुप नहीं कर सकता, क्योंकि जब पूजा भट्ट रहती है शी विल एक्सप्रेस एंड शी विल एक्सप्रेस एंड हाउ। ताली बजाइए फॉर द लेडी हु इज ऑलवेज अहेड ऑफ हर टाइम्स। भाई कितना बंदे को मक्खन पेलते हैं ना, मैंने देखा है। माने आप जब फिल्म में रहती है तो डायरेक्टर कैसे चुप रख सकता है एक नाम? हाउ कैन एनीवन स्टॉप पूजा भट्ट बाल्की सर? Cut. Can't. I don't want. भाई आर बाल्की सर बोल रहे हैं ही कांट स्टॉप पूजा भट्ट, और राइदर एनीवन कांट स्टॉप पूजा भट्ट। ये एक्चुअल में फैक्ट होगा। The eternal good boy, Dulquer Salmaan. Thank you so much, brother. Congratulations. Thank you, जब sir. आपकी सीतारामन did well, मुझे लगा मेरी फिल्म did well. You're eternally the good boy. तुम्हारी इधर उधर कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। तो कभी कभार मैं रोता हूँ, but I'm very happy to see you because you're one of the few nowadays who likes their work to do the talking, right, sir, or wrong? Absolutely. हाँ, He's always been like that. he's always been like that. And Balki sir, who's a favorite of the critics. है ना? When critics see you, I think they just want to hug you. They want to make love to you, that kind of thing. Absolutely. I can see it in their eyes. है ना? Yeah. But genuinely बोलो, do you all actually दिल से 2022 में आपको कितना importance लगता है critics का? Do you actually take them seriously? I'll say it from the heart. पूजा। इससे पहले कि ये लोग इसका आंसर करें, मैं आपको बता दूं ये एक मूवी आ रही है चुप, जिसमें सनी पाजी भी हैं। तो वो प्रमोशन पे नहीं आए, वो देख के मुझे हैरानी हो रही है यार, ये प्रमोशन ही होता है। इंटरव्यू तो चलो हो रही है, बट इसके अंदर हैरानी वाली बात यह है कि सनी पाजी प्रमोशन में नहीं है और वो अपने गदर 2 का शूट कर रहे हैं। तो गदर 2 आने वाली मूवी है जिसे हम देखना चाहेंगे। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, टीज़र या ट्रेलर उसका आए जल्दी जल्दी, सो दैट वी कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड। तो मैं उस पर रिएक्ट करूँ, मज़ा आएगा। एंड चलो आगे देखते हैं इसका जवाब क्या दिया इन्होंने। I never took them seriously. My father wrote me a letter at the onset of my career, and he gave me a little tip on how to deal with critics. And he said, Pooja, the critic is like the mosquito. He bites you because his livelihood depends on it. Don't take it personally. ओहो, क्या स्टेटमेंट दिया यार। और एक्चुअली ऐसा है, ये लाइफ में भी एप्लीकेट होता है, पता है। या तो क्रिटिक वो हो जो आपका फ़ायदा चाहे, या क्रिटिक वो हो जिसे आपसे फ़ायदा हो। तो मतलब आप देखो
इनके ऊपर कोई गलत रिएक्ट करने से मुझे फ़ायदा है कि हाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, मेरा वीडियो हाइप करेगा, मैं इनको कुछ गलत बोलूँगा, शायद इनको मेरी बात बुरी लगे, उस पर रिएक्ट करें, तो वो एक फैक्टर है। बट ख़राब नहीं करना चाहिए यार, बहुत से लोग इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, तो डोंट मिसयूज़ दैट। शी इज़ कम्प्लीटली राइट कि मस्कीटो वो है जो आपको काटेगा क्योंकि उसका लाइवलीहुड उस पर है। एक क्रिटिक का लाइवलीहुड इन्हें क्रिटिसाइज़ करने में ही है। So let's just see how it That's is. tongue in cheek, dark humor. That's the tone and tenor of Chup. So you know. So the point is, I think that we're all part of this big ecosystem together, and we need each other to survive. We need the other one to be there. And while you need to free us of the delusion that we tend to get as narcissistic entertainers that we are God, we must also free y'all from the delusion that just because you report on our delusions, you are not God. वो तो मैं तो पहले ही जाता हूँ, मैं तो मजदूर हूँ बाबा। So I think Chup shows that आईना, और जैसे कहते हैं ना, आईना तोड़ने से शक्ल ठीक नहीं हो जाती। पूजा इज सो विशियस मैन। मतलब एक होता है ना भिगो के मारना, मेरे को पूजा में ना वो फैक्टर नज़र आता है। एंड पूजा इज़ बिन, मैं पूजा मैम नहीं बोलता हूँ, आई सिंपली कॉलर पूजा के केस में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मतलब इट्स बिन टाइम्स दैट आई बिन वॉचिंग हर फिल्म्स, आई बिन अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर एक्टिंग। अच्छी एक्ट्रेस हैं बट बहुत कम फिल्में करती हैं यार, तो मैं पूजा ही बोलता हूँ। मैं हर किसी को मैम सर नहीं बोल पाता हूँ, तो लेट्स जस्ट सी हाउ इट इज़। मेरी शक्ल तो वैसे ही खराब है बचपन से ही सर। तुम्हारे मैं तो सबको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता हूँ जब लोग मुझे देखते हैं। तो दुलकर दिल से बोलो, नाउ डोंट गिव मी गुड बॉय आंसर्स। I want. Okay. Do you actually read what critics say? Everything, every word, obsessively, like a bad habit. But you underline also when they criticize you. I have what they- screenshots, you know, like when they write terrible things, I have screenshots. You dig my phone, there'll be screenshots from the past 10 years. But terrible things or good things? Good thing for some reason we just scan over. Like I think it's like a bad crash. Like you just gravitate towards the bad stuff. So what are the bad things? Genuinely, your phone pay. Like this reminds me of a comment that Abhishek Bachchan told me years back. There used to be a magazine which you all know very well. जिन्होंने लिखा था अभिषेक को 0 and supposedly Abhishek had that magazine cover, and whenever he steps out to shoot once in a while, he looks at that and he gets very motivated. तुम्हारा ऐसा कुछ है क्या? But definitely, I can't pinpoint an exact. The usual stuff of I'm only here because of the most obvious reason, and that I shouldn't be doing this, or I should probably quit or give up or something. That's more not critics but like haters. Critics would probably say things like I'm not convincing in negative roles or something like that. ये बहुत सही बात बोली कि जो लोग उस लेवल पे चले जाते हैं वो क्रिटिक्स नहीं, वो हेटर्स हैं। लेकिन क्रिटिक्स विल टॉक अबाउट देयर वर्क, और क्रिटिक्स भी यार ज़्यादातर मैं नहीं मानता हूँ कि सही होते हैं, बिकॉज मैंने इंडस्ट्री के अंदर इतना तो देखा यार, मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि बहुत से क्रिटिक्स प्रोडक्शन से पैसा खाते हैं टू गिव देयर रिव्यू। मतलब अच्छा हो तो भी कंट्रोवर्सी तो भी होता है। कई बार प्रोड्यूसर्स खुद पैसा देते हैं क्रिटिक्स को कि हमारा ख़राब रिव्यू दो, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी जिससे फिल्म चलेगी। तो ये एक एक्चुअल फैक्ट है। But this stuff drives me though. Like I'm like, you said I can't do this, I won't do this. I'm gonna do just that. So you think I'd only do some rom-com and go do some dark film? तो यानी कि you're basically like Rocky Balboa. And his trainer says, boss तू नहीं कर पाया, Apollo Creed, you say ah, Let's go. like that, huh? Balki sir. यार रॉकी बल्बोआ माय फेवरेट कैरेक्टर एवर ऑन द सिनेमा। मतलब 70 mm स्क्रीन पे अगर मैं किसी को भी देख के मेस्मराइज फील करता हूँ तो वो सिल्वेस्टर स्टैलोन, एंड स्पेसिफिकली रॉकी बल्बोआ, एक्सपेंडेबल्स, कुछ भी नाम ले लो। How do you manage to captivate the critics all the time? Now that you respected me so much, I need to answer. What is it with you and the critics? Is it genuine work, or is it just they feel like the underdog story doing very well? What is it? I mean, I love your films too, but have you got criticism? Because I search online and I can't find criticism on you. I would have just sent it to you if you just. Why did you search? But no, it's not that. It's I think I've received a fair share of both, but I realized that I've got a fair share of both just before writing Chup, because I had not read anything that's ever written about me except the good ones that people send you.
But because of something that happened very long back on my very first film, I stopped reading everything that was ever written. And for Chup, before writing it, I went back and read everything that's ever written about me, about every one of my films. I realized some very close friends are people who kind of trashed me the most. So it was nice. It was nice. तो बताओ ना सर, एक तो बताओ ना क्या क्या लिखा. No, I'll tell you, likha bahut hai. Those words are, I should say it needs to be read. I can't say it. But it said a lot of things, from just questioning my blindness to questioning my everything else under the sun, my taste. मेरी ये फैक्ट भी है कि आपके दोस्त लोग ही आपके बैक पिचिंग करते हैं. They've questioned, possibly, they questioned my cameraman, they've questioned me, they've questioned every actor that everybody, who's acted in my film. Many people have done lots of things, and very rude things were written. Oh. And it was the first review, because those days, there were not so many critics. There was just one great influential critic who trashed the film that I thought people would like, and people did like, and it went on to do it very well. But when you read something negative, because I was new to the industry, when you read negative, that you think is the truth, ultimately, from the most influential person. Actually. So that spins you into a kind of a, dark space, and then you kind of try and get out of it by just time. Time heals these things. But it never really went out of my head. A thought has remained. The thought of this film came long, long back. क्या बात है? But did it take you time to get out of your dark phase? No, dark means you just feel that you're shit. That's dark. Because of one person. Well, see, sometimes it takes one person. Despite Cheeni Kum being a successful film, despite a lot of people loving it, saying most wonderful things, people are amazed when I say I actually got affected because somebody wrote about you. Who can write about that film? You'll be very surprised what they've written. But it does happen. It does really happen, and it does affect. Because what happens now is you work. यार बाल्की सर की बातों से ना ऐसे लगता है कि इंडस्ट्री को ना बंदे ने घोल के पिया हुआ है. और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि इंडस्ट्री में मुंह पे भी आके लोग आपकी ना फिल्म को अंदर कुछ ना कुछ निकाल देंगे. और छोड़ दो यार, किसी दूर क्यों जाना है. मेरा एक फ्रेंड है, CA है, नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ. वो मेरा दोस्त है. अब उसको चार्टेड अकाउंटेंसी का ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा पता है, दो आई ऑल्सो वॉज अ स्टूडेंट. लेकिन मैं ना इनिशियली उसको अपनी वीडियो भेज देता था. तो वो एक ना रिव्यू देने का तरीका होता है. आप रिव्यू देते हो कि हाँ यार यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको अगली वीडियो में ठीक करियो. और उसका ये नहीं आता था तू अगली वीडियो में ठीक करियो, उसका आता था तेरी ये वीडियो में ये गलत है बस. और अगर तू इसको ऐसे नहीं ऐसे शूट करता तो ज़्यादा बेटर होता. बंदे ने कभी ज़िंदगी में कैमरा नहीं उठाया और उसको यही नहीं पता कि जो शॉट एक एक्सीडेंट का शॉट था, मान लो वो जो ड्रोन है वो ड्रोन शॉट नहीं था, वो जिमी जिप से लिया हुआ शॉट था. तो मतलब आप कि कुछ भी आगे सलाह दे दोगे आप. दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड इज बैड क्रिटिक्स. तो फिर ऐसे लोगों से बंदे का मन थोड़ा हो जाता है कि यार क्यों भाई मैंने सलाह मांगी. तो For a long time for a film, and then somebody just takes 1 hour to kind of write something, and that person goes, and even if you disagree with him, there is no way to hold him accountable. Actually, I mean, you can't say you've held me accountable for something that you thought was wrong, Yeah. and I can't hold you accountable for something that I think is wrong. So where have you gone? You've cursed me and left. Where have you gone? That, Pooja, I would presume कि आपने कभी अपने life में have you picked up and trashed a critic on the phone? Have you picked up a call and say how the hell can you write this? Have you done that? No, I've never picked up the phone and said, how the hell could you write this? But I remember when my film Jism 2 was being released and we had a screening. And ये मार देगी. these two critics who I've known for a long time, one of them before she even became a critic, actually called me and said, can we come to the screening? I said, it's a screening for the trade. So we're not inviting critics. They were like, no, we really need to see this, blah, blah, blah. They came there and they sat together and they laughed through most of the movie. So when I found out, I just called to say, listen, your opinion on my movie does not count. But when the trade is there, and it's a trade screening and you're going to sit there and you're going to laugh, it's going to affect my business. So I have a problem with that. And I think the point was well taken and we moved on from that, because at the end of the day, I think that people try to control you with praise and they try to control you with criticism. So I'm not playing that game. I say thank you to both and I move on. जिनको ये बात समझ में नहीं आई मैं बता दूं, पूजा भट्ट ने ये बात बोली है कि कहते कि जब जिस्म 2 रिलीज़ हो रही थी
तो 2 क्रिटिक्स ने उन्हें अप्रोच किया जो कि क्रिटिक्स बनने से पहले इनको जानते थे. नाउ दे आर वेरी गुड क्रिटिक्स. तो उन्होंने बोला कि हम जिस्म 2 की स्क्रीनिंग पे आना चाहते हैं. तो पूजा भट्ट जी ने बोला कि दैट इज़ फॉर द बिजनेसमैन, दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं को दिखाऊँ. बट उन्होंने किसी तरीके थोड़ा पुश किया कि हम आना चाहते हैं, तो इन्होंने उन्हें बुला लिया. तो वो क्या हो रहा था, थ्रू आउट जिस्म 2 वो वहाँ पे बैठ के हंस रहे थे. तो पूजा ने बोला ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन जो भी है मेरे लिए मैटर नहीं करता है. तुम एक काम करो, तुम अगर मेरे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करोगे, क्योंकि जो ट्रेड है, जो बिज़नेस है, अगर उसको इफ़ेक्ट हो रहा है तुम्हारे बोलने या हंसने से, देन आई एम नॉट गोना लीव यू. तो वो कोई भी नहीं छोड़ेगा यार, वो कोई भी नहीं छोड़ेगा. और बहुत जेन्युइन बात बोली, अच्छा बोला. I'm not any lesser because you do not like me, and I do not think that I, levitate because you do. So I'm just here to sing my song and go. But I think that it's extremely important that we're living in times where everybody is a critic about everything, and we're so woke, and we're so quick to kind of outrage about a film somebody's made, what they've said, how things are being run. And I think that what I detest about people who watch any body of work is when you have this gotcha mentality. Yeah. I mean, are you there to enjoy the film and, experience it and then love it or hate it or whatever? बातें पकड़ने वाले लोग, या आई गॉट यू मैन, यहाँ पे तो गलत है. वो बस वही बात मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ गलत पॉइंट करना, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट करना, कहाँ तक है यार? ये क्या घटिया मेंटालिटी है. बहुत सही बात बोल रहे हैं इस टाइम, बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी मुझे इंटरव्यू. But if you're there to kind of just constantly pin me down every time I fumble or kind of stop me before my mouth even opens and a word comes out, then I have a problem with that. And that reflects you more than it reflects my work, however mediocre. So at least I told you she's vicious. I'm out there in the arena and I'm getting my face bloodied and I'm the gladiator while you're in the stand screaming for more blood. I love this. Well. That's why always a Pooja Bhatt fan. Huh? Dekha jaye, if you look at it, Same people are here. becoming very vocal, right? Real, talking, expressing. Our lady did this 20-25 years back, right? Yeah, and it was not profitable at all, I can assure you. Why was it not profitable? Tell me honestly. Which is why I say time is the best critic. So, I mean, the thing is that if it's relevant today, what I said, it was not very popular then. Yeah. तो अभी क्या हुआ, अभी सिद्धार्थ ने बोला, कहते कि पूजा उस टाइम पे वो बातें बोलती थी जब ये बोलने का टाइम नहीं था. और पूजा ने यही बोला कि हाँ वो टाइम गलत था, तभी नहीं हो पाया. और एक्चुअली जो पूजा 25 साल पहले से कर रही है वो आज सभी लोग कर रहे हैं. पीपल आर आउटस्पोकन एंड शी इज़ आउटस्पोकन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स. सो डिफरेंस है. तो ये टाइम सबसे बढ़िया क्रिटिक होता है आपका, यही बात बोली इन्होंने. And in Chup, we have the greatest example, which is Kagaz Ke Phool. And I think that, is there any greater example than that film which was panned and completely torn apart, and today we claim it as our classic. So I think time is the greatest critic. So I do hope that people love Chup, and if they don't love Chup, then we'll have to wait for another 25 years, I guess, to know, which way the cookie crumbles. The cookie won't crumble. In the meanwhile, there are dead bodies lying in the way, you know who to catch. Him or me, perhaps, you Sunny. never know. For sure. No, I didn't want to even say Sunny and give it all away. Okay. Oh, yeah. Sorry. Cut that out. I met you during Zoya Factor. I met you during Karma as well. Yeah. I liked your performances in both the films, but they didn't sell at the box office to that level. Sitaramam, congratulations on that. But did that break you down? Because that was like the entry for Dulquer Salmaan in the Hindi film industry. No, I don't think I've ever thought of it as a entry. I'm very fortunate to always have a lineup of films waiting for me, even if one fails. I know I'm good for the rest of the year. And then I'm hoping, law of averages, it all balances out. But I've never chosen films based on what potential box office it can do. And in having not chased that, I feel like I found it in whatever measure. So I didn't see it as a big launch. I was like, okay, interesting idea. I want to try and be a part of it. I've not done a sports-ish film. I've not played like a cricketer or an athlete. So I like that. But it didn't really, it's not something that I was upset about. I was upset about maybe the way it was released, like some production issues I had with it. But these things, the only thing you can keep doing is keep working, keep doing stuff you believe in.
you genuinely believe that box office numbers don't count when you're picking a script, because that's very few people I've heard them saying this. But how do you predict this? How can I read a script and be like, this has all the potential to be 50 crores, 100 crores, whatever. एक्चुअली यू कांट. और आज के टाइम में यू नेवर नो कि कौन सी फिल्म 50 करोड़ चले करेगी स्क्रिप्ट देख के, बिल्कुल भी नहीं. I mean, I'm on the other side. I've been told that there are these corporate head honchos nowadays, और पहले ज़माने में होते थे 5 लोग होते, सर ये तो फटेगा बॉक्स ऑफिस पर. That's always there. I don't think we have corporates for that. But they don't exist anymore. All those people who predicted are gone. Yeah, they're all gone. They're all. Hey, wait, everybody's predicting this. Everybody's a pundit for 1 week till they're proven wrong. Some new theory happens. Next, another theory comes. But that then just becomes a project. It doesn't. It's not something that's content driven or like something that's Actually. inspired. It's like we put this person, we put that person, get this music director, this actor, this writer, this So थोड़ा producer. डांस होना चाहिए, थोड़ा हॉर्स राइडिंग होना चाहिए, वैसे No, टाइप. it's like a thali. Like and then you Yeah. think that's you have all the ingredients for like a big एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स एक टाइम करते हैं कि हाँ ये बड़ा एक्टर है, ये बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है, ये बड़ा सिंगर है, इसको उठा के इकट्ठा करके कोई खिचड़ी बनाते हैं तो वो थाली बनती है. दैट इज़ नॉट अ स्पेशलिटी. भाई बहुत ही बढ़िया था सेशन, बट पूजा वाज नेक्स्ट लेवल इन दिस. मुझे बड़ा सही लगा द वे शी टॉक्ड, मतलब बहुत ही कमाल. तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना जिन्होंने अब तक वीडियो देखा है. थैंक यू सो मच. मुझे पता है बीच में थोड़ा सा पार्ट बोरिंग भी था तो बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मैं आपके लिए वीडियोस हमेशा लेके आता रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा.